Okay, so very warm welcome to all the wonderful people on Vedantu Commerce. कैसे हो बेटा? कैसी चल रही preparation? Let's say hi in the chat box and let me know who is present over here. फटाफट से hi लिख दीजिए. 6 लोग present हैं and I wanted to know who they are. So this is our Menti session. We will do 10 questions that you must do before you go for our examination. This topic, linear inequalities, is in your 11th standard. But 12 people can also should go for it. I would recommend. Why? Because this topic has wide usability. Okay, so this is very important topic for 11 because you are going to deal with this topic again in every other chapter of mathematics. बार बार inequality से आप deal करने वाले हो. So cricket talks Madhur, hello. Welcome all of you guys. Write down the code. It's 6091841. How you will access the quiz? Go to www.menti.com and you will be asked a code and you will apply. You will write over there 6091841. फटाफट से join करो and let me know. Once you will join, let me know. Okay, so this is your schedule which is visible on your screen. Yesterday was 1st of February and we have done differential equation topic which is of the 12th standard, very important, which I can say somewhere around 4 to 5 marks topic. Today we are doing linear inequalities which is having wide usability in the 12th also and many other chapters of the 11th also. So this is going to be a very important session. On 3rd, that is tomorrow, we are going to start vector algebra, which is very important topic for the 12th because vector algebra and 3D geometry together contributes 15 marks. 15 mark बेटा. तो दो सेशन में 15 मार्क स्कोर करेंगे हम लोग on the 3rd and the 5th February. On the 4th and the 6th of the February, we will do trigonometric functions in 3 parts. These are 2 parts और अगला 3rd part अगले वीक में आने वाला है. 3 पार्ट इसलिए लिए बेटा because trigonometry is one of the very important topic that you have to do in your 11th. बहुत अच्छे से करना है, तोड़कर करना है. So I hope you have joined the quiz session. Code again, it's 6091841. Let's start. So let's see how many players are there on the screen. कितने लोग हैं? Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. 5 people have joined. अच्छा फटाफट से काम करना आप सभी को. Share this session to your friends in your group, in your Telegram groups, in your WhatsApp group to increase the competition. Competition बढ़ाने पर मजा आएगा कि रेस में फर्स्ट और सेकंड कौन है. अदरवाइज अकेले दौड़ने का मजा नहीं है बेटा. तो फटाफट से शेयर करेंगे सेशन को और अगर आप सेशन के अंदर हो तो hit the like button and boost us, motivate us to come up with many such sessions. तो show your love, दिखाइए अपना प्यार दिखाया करो बेटा. आप लोग मालूम तो चले कि आप लोगों को ऐसे सेशन चाहिए भी या नहीं चाहिए. So it's your target that we should reach at least 20 people in this quiz. कम से कम 20 लोग अटेंड करना होगा. आप लोगों को ये मेक श्योर करना है. So let's start with first question in the next 5, 10, 8, 7, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start. Question number 1 on your screen and share whenever you got the time. Question number 1. X plus 3 upon x minus 2 is greater than 1 by 2. How to solve such inequality? Let's see. Then x lies in the interval. We will read each and everything. What is the meaning of this kind of bracket? Where we will apply this bracket? How to solve this inequality? And what mistakes we all do commit. So 5 people have answered and only 2 have correctly answered. अब फटाफट से आप क्या करोगे? Solution समझिए और share कीजिए. So correctly given by Prachi and Madhur. These 2 people have correctly answered this question. Just hold on a second. Now we will discuss how exactly we should have solved this particular question. कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को? X plus 3 upon x minus 2 greater than. Read the question. X plus 3 upon x minus 2 greater than 1 by 2. Common mistake. Very common mistake that you might have also done. Let's cross multiply. कितने लोगों ने honestly किया है कि you guys have a thought to cross multiply and you have applied it. आपने ये किया. इससे चेक करते हैं आंसर क्या आएगा. 2x plus 6 greater than x minus 2.
and when you will solve this, you will come up with x greater than -8. Your solution will come out as -8 to infinity. अच्छा, solution देखते हैं क्या है. ओके, इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल यही सॉल्यूशन है, लेकिन अगर बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर ये सॉल्यूशन आपका रॉन्ग है इन योर एग्जामिनेशन, इफ यू विल गो बाय दिस मेथड, डेफिनेटली योर सॉल्यूशन विल बी रॉन्ग सॉल्यूशन. ऐसे नहीं कर सकते. व्हाई? You should know the reason why. Because I cannot cross multiply in the inequality. Write down over here, never cross multiply. So you will write down all your learnings. Never cross multiply in inequality. What is the reason? Because when you will cross multiply a positive number, there is no issue. When you will cross multiplying 2, there is no issue. Issue is with this x minus 2. इसके साथ issue है, because we have no idea whether it's positive or negative. आई बात समझ में? So what you should always do, that you should make your RHS. अगर आपने सेशन अटेंड किया हो, wavy curve method, always make RHS as equals to 0, and this will not change sign if you will add or subtract something. And now you can take LCM and solve this one. You will have 2x plus 3, 2x plus 6 cross multiply, minus x plus 2 upon x minus 2 greater than 0. And final inequality that you will have is x plus 8 upon x minus 2 greater than 0. And now you will solve. Make sure that the coefficient of x is 1 and positive. After this, write down the critical points. Critical points are those points where each of the factor will become 0. For this, critical point is -8, and for this, critical point is 2. After this, always start with the plus sign and check whether this particular factor is having odd power. If it is odd power, change the sign. If it is even power, do not change the sign. X minus 8, x plus 8, odd power, x plus 8 to the power 1. Power 1 is the odd number, so change the sign. Okay, so your solution will be, आपका solution क्या होगा बेटा? ये आपका होगा -infinity to -8 and 2 to infinity. This will be your real solution. ये आपका solution रहेगा. I hope it's clear. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग. आई बात समझ में? सॉल्यूशन कैसे निकालना था. अच्छा, यहां पर एक माइनर सी मिस्टेक है, ऑप्शन ए लिखा हुआ है. अब आपको समझ में आया कि आंसर क्या होना चाहिए. ओके, अच्छा चेक कर लेते हैं. आपके सामने क्वेश्चन क्या था? x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 1/2. लेट्स पुट 0. अगर आपका आंसर ए ही होना था, दो इट्स रॉन्ग, यहां पर एक करेक्शन होगा. ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी. सी इज वन ऑफ द ऑप्शन which is satisfying this particular one. Put x equal to 0, you will come out with -3/2 greater than 1/2. This is false. So obviously option number 1 is not correct. You cannot put x equal to 0. I hope it's very clear. Now question number 2, let's have you on a screen. Make sure that you will learn each and everything. Reason of x o y plane represented by the inequalities x greater than equal to 0, y greater than equal to 2, 2x plus y less than equals to 10 is. Check करेंगे. We will draw the graph. X greater than 0. What does it mean? Y greater than 2. What does it mean? 2x plus y less than equal to 10. और आपको बताना है कि what does this reason represent which satisfy all the three inequality. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लास्ट 3, 2, 1. Yes. Time is up and 7 people have answered and correctly given by 3 people. 3 लोगों ने बिल्कुल सही दिया है आंसर. कौन कौन 3 लोग सही हैं? करेक्टली गिवन बाय, किसने आंसर सही दिया है? प्राची, प्रीतिका एंड रितिका एंड रिया. ओके, सो लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसको कैसे सॉल्व करना है? अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट करेक्ट आंसर. नाउ दिस इज योर सेकंड वन. व्हाट एग्जैक्टली इज गिवन? लेट्स लर्न. फर्स्ट स्टेटमेंट इज x greater than equal to 0.
What is the meaning of x greater than equal to 0? That we are talking about first and fourth quadrant. कैसे ड्रॉ करके देखते हैं बेटा? X greater than 0. X will be less than 0 on the left of the y-axis. So you will say this complete region. This complete region, first and the fourth quadrant. Okay. Now y is greater than 2. If y is greater than 2, that means this line is y equal to 2, and we are saying that above than this, so obviously we are talking about this region in the first quadrant, but above y equal to 2. And one last thing over here, it is given 2x plus y, यही है 2x plus y less than 10. अब ये कैसे सॉल्व करना है? For this you need to check if this is not inequality, this is equality, this would be our equation of a line. हमेशा आपको ऐसे ही करना है. It does not matter whether there is an equality or not, but always you will treat it as equality to draw the line. अब draw करते हैं. Put x equal to 0. X equal to 0 means I am talking about a point on the y. You will have y equals to 10. This is y equals to 10. So 0, 10 is the point where this line will cross the y-axis, and when you will put y equal to 0 means I am looking for a point on x-axis. You will have x equal to 5. तो आपकी जो लाइन बनेगी ज्वाइन करने पर ये बनती है. Okay, this is 5, 0. And now there is a equality. In the inequality, we will draw a non-dotted line. If there is no equality over here, we will form a dotted line kind of this if there is no equality. And we are saying less than 10 means just below of this line. Okay, so this is the reason which will satisfy all these three inequality, and this is the interior of the triangle, not the exterior one. So answer is option number C. I hope this is very clear to all the people over here. Is that clear or not clear? Let me know. If you have any doubts, you can ask your question. Now we will do question number 3 on your screen. फटाफट से देखते हैं कैसे करना होगा और क्या है क्वेश्चन. चलिए, सो अगर आपको समझ में आ जाए ना कोई चीज तो आप मुझे बता दिया करो, और नहीं समझ में आए तो लेट मी नो. वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस. क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन. जितने लोगों को कोड नहीं पता है, इट्स 6091841. अब यहां पर आप जो यूज करोगे दैट इज वेवी कर्व मेथड. क्या यूज करने वाले हैं हम लोग? वेवी कर्व मेथड. x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 is नेगेटिव. ये नेगेटिव कब होगा सोचिए, और आंसर करने से पहले क्रॉस चेक कर लेना कि वेदर आई एम गिविंग द राइट आंसर और नॉट. नेगेटिव कब होगा? सेम वी विल यूज वेवी कर्व मेथड. वी विल अगेन डिस्कस हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू यूज वेवी कर्व मेथड. सो लास्ट 30 seconds. 3 people have answered, and code is in the chat section. You can note down and join still. Last 15 seconds more. 6 people have answered. फटाफट से करेंगे. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so 7 people have answered for this question, and correctly given by just one person. That means you guys need to learn a lot in this chapter. और lot का मतलब है कि wavy curve method आना चाहिए बेटा. Prachi has given the right answer and she is on the top. Now question number 3, that if fx is equals to x minus 1, x minus 2, x minus 3, and we are saying for what values of x this is less than 0. यही दिया हुआ है कि ये किस वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा. इक्वलिटी साइन नहीं लगाएंगे. क्यों नहीं लगाएंगे? बिकॉज इट इज नॉट गिवन नॉन पॉजिटिव. अगर नॉन पॉजिटिव लिखा होता तो इक्वली लगाते. इफ इट इज जस्ट नेगेटिव वी विल अप्लाई लेस देन साइन. नाउ स्टेप नंबर 1, मेक RHS. Step number 1, this is the method, wavy curve method. Okay, make RHS equals to 0. We have done this, yes. Step number 2, make sure that coefficient of x is equals to 1. Coefficient of x is 1, yes, yes, yes.
Step number 3, find critical points. Critical points are those values of x at which each and every factor will be 0. Like x minus 1 will be 0 at x equals to 1. This is 0 at x equals to 2. This is 0 at x equal to 3. बड़ा सिंपल सा मेथड है. And now draw x axis. Now draw x axis. ये आपकी x axis है. And mark over here critical points in the same manner जैसे number line पर लिखा होता है. Number line पर 1 is over here, 2 is over here, 3 is over here. And now start with the positive sign from most right hand side, and then you will check this factor. The critical point has been obtained by x minus 3. Okay. Now x minus 3 is having the power 1. So sign will change, the power is odd. Again, 2 is the critical point obtained by the factor x minus 2, power of which is 1, which is odd. So sign will change around this one. And now you will check x minus 1, power is 1. Okay, so this critical point has been obtained by x minus 1, power on this is 1. So that means sign will get changed. And now question is, what this sign says? What does the sign says? Your where function is less than 0 will have the negative sign. Where function is positive will have the positive sign. So we can say fx is less than 0 for x belongs to, किस वैल्यू के लिए x की? ये आपका आएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1. Now infinity and minus infinity never included. Where is there is no inclusion, we will use parentheses. Okay. And minus 1 will not, this is not minus 1, this is just 1. Minus infinity to 1. Infinity and minus infinity never included. 1 is also not included because there is no equality in inequality. So this one. Union means we have some more values to add over here. This is from 2 to 3. Again open interval because 2 and 3 not included because there is no sign of equality over here. So your answer is minus infinity to 1 union 2 to 3. Clear? Minus infinity to 1 and 2 to 3. तो ये क्या हो जाएगा? 2 to 3 and minus infinity to 1. इसका मतलब भी तो यही है बेटा, जो हमने किया है इसका भी मतलब वही है कि this is x less than 1. बिल्कुल ठीक बात बोली आपने. All the values x less than 1 and all the values between 2 to 3. There is another way of writing this answer. I hope it's clear to all the people. Now question number 4 on your screen. फटाफट से देखते हैं कितने लोग सही करेंगे इस बार. अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं कौन सबसे पहले लगाएगा, सही करेगा. द सोल्यूशन ऑफ द, बहुत अच्छा सवाल है ये. ओके, बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न मॉड फंक्शन एंड इनइक्वालिटी. मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 लेस देन 2 कैसे करेंगे सोचते हैं. लास्ट 25 सेकेंड्स. 23, 22, 20. Ten people have answered. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. Only 3 people were able to answer on this and none of you is correct. कोई भी सही नहीं है. तो जैसे मैंने बोला आप लोगों को, we need to learn a lot guys. We need to learn. We have to work on this concept क्योंकि बहुत बार आएगा ही, ऐसा नहीं कि एक बार आएगा. You will face inequality again and again, and this is your one of the chapter which you cannot escape and which you should not escape. Question is modulus of x minus 1 less than 2. Though we have discussed this particular theory in the session of wavy curve method, but still let's do it again. What and how exactly we will solve this mod function. Open it by making the cases. First case is if inside thing is, case number 1, if inside thing is greater than 0. Second case, if inside thing is less than 0. If inside thing is greater than 0, we will remove the sign of modulus as it is. हम इसको हटा देंगे. Okay. And if inside thing is less than 0, we will apply minus sign after removing the modulus function. बस इतना सा ही करना है आप लोगों को. Now solve this inequality.
and solve this inequality as well. As it says x greater than 1 and it says x less than 3. यही है question? Yes, there is no equality. Yes, x greater than 1. If x is greater than 1, then x has to be less than 3. Draw the number line. This is 1, this is 3. X greater than 1. 1 is not included. There is no sign of equality. So open circle. So open bracket around 1. And less than 3. Open circle. And where is the intersection? What values will satisfy both the things? Is x from 1 to 3. This is correct. This will give you this particular result. But if x minus 1 is less than 0, so x is less than 1. अगर x 1 से less than हुआ, तब आप क्या करोगे? Minus times of x minus 1. When inside thing is less than 0, we will apply minus sign when we will open the mod function. Minus times of x minus 1 less than 2. Now since there is minus sign, you have to make coefficient, what I have said, make coefficient of x make coefficient of x is equals to 1. So for this I need to multiply minus 1 both the sides, and when rule number 3, when we multiply with a negative number, this will become x minus 1, this will become minus 2, but the inequality sign will get changed. X minus 1 greater than minus 2, and when you will solve this you will have x greater than, क्या निकलेगा ये, x greater than minus 1. Let's draw this on the number line. Number line पे draw करते हैं. This is minus 1, this is 1. We are saying x less than 1. X less than 1. And over here we are saying x has to be greater than minus 1. So the reason which satisfy these two inequalities is minus 1 to 1. So we can say either x can be from 1 to 3 or we can say from minus 1 to 1. दोनों ही solution है. ठीक है? तो आपका फाइनल सोल्यूशन क्या होगा? माइनस 1 to 1 यूनियन 1 to 3. Now you cannot write this as minus 1 to 3 because if you will do so, you will include 1. It is clearly mentioned 1 is not included even in this inequality. 1 is not included even in this inequality. But here you have included 1. So ये गलत हो जाएगा. आंसर क्या होगा? माइनस 1 to 1 and 1 to 3. माइनस 1 to 1 नहीं है, 1 to 3 भी नहीं है. So you will check which one satisfies most. यानी कि माइनस 1 से बड़ा हो, ये तो श्योरली गलत है, ऑप्शन नंबर बी, ये गलत होगा. ठीक है, यहां पर ये गलती है. आपका आंसर क्या होगा? माइनस 1 to 1 यूनियन 1 to 3. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन. फटाफट से करेंगे. तो आपका ऑप्शन भी गलत है. दो ऑप्शन बी इज गिविंग अस मोर करेक्ट आंसर, बट दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग. बिल्कुल गलत है ये. ठीक है, माइनस 1 to 1 एंड 1 to 3. क्लियर है बात? अच्छा चलिए अगला सवाल लगाते हैं. अच्छा अब हम लोग करने वाले हैं, अच्छा यहां पर देखिए थोड़ी सी और एरर जो हम लोगों ने की है कि यहां पर इक्वलिटी हमें लगा देनी चाहिए थी. क्यों? बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी ओपन द साइन वी हैव टू टेक इक्वलिटी. यहां पर हमें लेनी थी इक्वलिटी. ठीक है, तो आंसर बिल्कुल ठीक है. ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस 1 to 3. लेकिन आपको बात समझ में आई कि ये क्यों नहीं होगा और ये क्यों होगा? दोनों के पीछे लॉजिक है. यहां पर अगर ऐसे सॉल्यूशन होता है देन योर ऑप्शन बी इज राइट, बट ओवर हियर इट्स क्लियरली मेंशन्ड दैट 1 इज इंक्लूडेड बिकॉज वी आर अप्लाइंग इक्वालिटी इन द केस के अंदर हमने इक्वालिटी नहीं ली थी. तो इसलिए हम लोग यहां पर बोल सकते हैं माइनस 1 to 3. आई होप इट्स वेरी क्लियर नाउ टू ऑल ऑफ यू. इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन लगाएंगे. मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 ऑन योर स्क्रीन. करिए फटाफट से. क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन. मॉडुलस ऑफ x minus 1 upon modulus of x minus 2. Again we are going to make the cases. What is inside of the mod, make the cases according to it. ठीक है, तो x greater than equal to and x less than. We will make two such cases. x belongs to all real number, then interval of x which will satisfy this inequality. ये हमें चेक करना होगा. So let's see how many of you will give it correctly. Last 30 seconds, 2 people have answered. Make sure all of you will give the answer.
जितने भी लोग चैट सेक्शन में हैं और अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, कोड इज रिटन ओवर देयर, फटाफट ज्वाइन करो बेटा, और चैट क्विज में आंसर करना आप सभी को। मॉडुलस ऑफ x -1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x -2 greater than equals to 0. So 4 people, only 4 people have answered. 2 are correct, 2 are wrong. ठीक है, अब बाकी लोग क्या है सेशन में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 था मॉडुलस ऑफ x -1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंफर्म करते हैं यही क्वेश्चन होगा, यस। अब केस नंबर 1 में क्या बनाऊंगा? What is inside of this x? So x is greater than 0, then we will write it down as x -1, because if inside thing is positive, we will just write down directly without changing anything, just remove the sign. And now after this, make sure you have done all the inequality on the number line. So critical point is 1, critical point is 2, and it is saying that plus minus plus. Yes or no? Now for this we will make a wavy curve, and we are saying that this will be greater than 0 for minus infinity to 1. 1 is included because there is equality. Union 2 cannot be included because 2 is in the denominator. अगर हम x equal to 2 put करेंगे, it will be not defined. यही होगा, लेकिन x has to be greater than 0. ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो this is the intersection point and this is the intersection point. So we will say that over here your answer will be 0 to 1 union 2 to infinity. ये आपके पहले केस का solution. Now case number 2. Case number 2, if x is less than 0. So you will write down minus x -1 upon minus x -2 greater than equal to 0. Take minus common from here, you will have minus times of x plus 1 upon minus times of x plus 2 and greater than equal to 0. Okay, minus minus sign cancelled, and ultimately you will be having x plus 1 upon x plus 2 greater than equals to 0. Draw the number line, draw the critical point from here -1, and from here it's -2. And now you will go with the same plus minus plus. What we are looking for? This one. Okay, but x has to be less than 0. तो इसके बाद वैल्यूज को मैं रब कर दूंगा, एंड अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे आंसर को? दैट माइनस इंफिनिटी टू -2 is not included because it's in the denominator. Union -1 to 0. अच्छा, लास्ट वाले केस में आंसर क्या था? 0 to 1 and 2 to infinity. Union 0 to 1, okay, 1 was included, but 2 to infinity. Union 2 to infinity. So final solution बेटा क्या होगा? Final solution आपका होगा minus infinity to -2 union -1 to 1, 0 included, and we can merge these two inequalities, and union 2 to infinity. This will be your final solution, which is option number, कौन सा है बेटा? Option number D is the answer. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लगाएंगे on a slide. Let's see who have got points over here. So Prachi and Ritika have got the points. बहुत अच्छे बेटा, बाकी लोग भी बेटा करिए। दिया, जयंश, पवन, आप लोग क्या हो कि एक दो क्वेश्चन नहीं होते चले जाते हो, ये मत करिए। डू योर क्वेश्चन, हैव द लर्निंग करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, देखते हैं कितने लोग सही कर पाएंगे। So those who are in this session, make sure that you will attempt all the question, and you will make sure that you have a learning from these 10 questions. और आप ये 10 क्वेश्चन करने के बाद मेजर कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे क्लियर होने चाहिए, and there is nothing outside of this. x minus 1 upon into 2 minus x upon x minus 3 greater than equal to 0. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पर छोटी सी गलती, छोटा सा पॉइंट है जिसमें आप इंक्लूड करना है। Last 20 seconds left. Last 17, 16, 15,
14, 13, 12, 10, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, केवल 2 लोग इस क्वेश्चन को आंसर कर पाए हैं. देखते हैं कौन कौन किसने आंसर किया है. ऑप्शन नंबर वी वॉज करेक्ट एंड गिवन ओनली बाय करेक्टली बाय प्राची. अब देखिए बाकी लोग, सीखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को. ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. क्वेश्चन नंबर 6 था ये. ठीक है, क्वेश्चन वाज x minus 1 into 2 minus x upon x minus 3 is greater than equals to 3. ये क्वेश्चन था. स्टेप नंबर 1 क्या है? राइट हैंड साइड. बताइए, आराम से सोचिए. पहला स्टेप क्या था बेटा? पहला स्टेप था राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू 0. यस, ओके. सेकेंड स्टेप वाज each and every factor, coefficient of each and every factor should be equals to 1. क्या ये सही है? It is fine over here, it is fine over here, but यहां पर ऐसा नहीं है. It's -1. So what we need to do, we have to multiply this equation with -1. Multiply both the sides with -1. So x minus 1 will remain x minus 1. X minus 3 will remain x minus 3. But minus times when multiplied to 2 minus x will become x minus 2. And minus 1 into 0 is 0. But when you multiply with a negative number in an equality, rule number 3, which says inequality sign will get reversed. After this, find out the critical points. What are critical points? Critical points are those points where each and every factor will become 0. X minus 1 becomes 0 at x equal to 1. X equal to 2 and x equal to 3. And I am circling this particular point because x cannot be equal to 3. ये इसके बराबर नहीं हो सकता. Why? Because it's in the denominator. Always mention. ठीक है? अच्छा, x equal to 3 नहीं हो सकता, but we are checking critical points. And now make sure 1, 2 and 3. Start with the positive sign from the most right hand side and then alternate, change the sign if there is odd power on the factor. Like x minus 3 has been obtained from x minus 3, power is 1, we can alternate the sign. And then 2, about 2 it's x minus 2 power 1, power is odd, you can change the sign. And similarly you can change the sign. But what we are looking for? We are looking for less than equal to 0. So you would say minus infinity to 1. 1 included? Yes, it's in the denominator. Union 2 to 3. 2 included? Yes, there is no problem, but 3 is not included because 3 is in the denominator. If we will include 3, it will create not defined indeterminate situation. And on this reason, we will say we are having negative sign of the function. इसका negative है, तो इसका positive अपने आप हो जाएगा. आई बात समझ में? तो आपको ये basic follow, you have to follow the basic steps. So answer is minus infinity to 1 and 2 to infinity, 2 to 3. का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, अब लगाएंगे अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू विल डू इट करेक्टली. कितने लोग इसको सही कर पाएंगे? मॉडुलस, अगेन अ क्वेश्चन ऑफ द मॉड x minus 1 from 1 to 3. टेक योर टाइम. यू आर हैविंग 40 seconds to do this question. Last 15 seconds. One person has answered. अब फिर से मॉड के क्वेश्चंस बहुत आपको डील करने होंगे बेटा, और यहीं पर आप फंसोगे. सो मेक श्योर यू नो हाउ टू सॉल्व मॉड वाले क्वेश्चन. सो ओनली 2 people have answered for this and correct answer has been given by none of you. देखते हैं, सीखते हैं क्या है. मॉडुलस ऑफ x minus 1. देखिए, मॉडुलस ऑफ x minus 1, it is from 1 to 3. Now you have to break in case number 1. Case number 1 clearly says that modulus of x minus 1 is greater than equals to 1. And case number 2 says this particular inequality, that modulus of x minus 1 is less than equal to 3. Okay. Now let's solve this inequality.
अब इसके अंदर we will make the case if we will say that if inside thing is greater than 0, then we can say x minus 1, remove the mod sign without changing the sign, greater than equals to 1. Okay, so when you will solve this, you will have x greater than equals to 0. Remember, when we will say inside thing greater than equals to 0, so x is greater than equals to 1, and from here you will have x greater than equals to 2, and when you will solve this, you will come out with x belongs to 2 to infinity. करके देखोगे, ठीक है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे 1, नंबर लाइन पे 2, x greater than equal to 1 and x greater than equal to 2. So ultimately this is the reason where both of these inequality will merge. Now case number 2, this was the case number 1. Now case number 2, inside the case number 1 is if inside thing is less than 0. So if x minus 1 is less than 0, we will say x is less than 1. And then you will say that if inside thing is less than 0, apply minus sign after removing the modulus 1, greater than equals to 1. Multiply both the sides with minus 1, you will have x minus 1 less than equal to, if you will multiply with a negative number, inequality will get reversed. And you will come out with x less than equal to 0. Draw the number line. This is saying x less than 1. This is saying x less than equal to 0. So ultimately your solution over here is union x will be from minus infinity to 0 and 0 included. So how you will write down the first solution? How you will write down the final solution of the case 1? अगर आप केस 1 से सोल्यूशन निकालोगे बेटा, इट विल कम आउट एज माइनस इन्फिनिटी टू 0 इंक्लूडेड यूनियन टू इन्फिनिटी. ठीक है, ये आपके केस 1 का सोल्यूशन है. अब हम निकालेंगे केस नंबर 2. केस नंबर 2 क्या था आपका कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1. देखिए केस नंबर 2 क्या है, हम इसकी बात कर रहे हैं लेस देन इक्वल टू 3. फिर से उसमें करेंगे inside thing is greater than equal to 0, means x is greater than equals to 1, and if inside thing is positive, you can just remove the modulus sign without changing any sign, less than equals to 3. You will have x less than equals to 4. Draw the number line which says x greater than equal to 1 and x less than equals to 4. So you will draw this one. This is the intersection point. You will say x belongs to 1 to 4. अब इसी के अंदर दूसरा पॉइंट, if inside thing is less than 0, means x less than 1, and you will apply minus sign if you will remove the modulus less than equal to 3. Multiply minus sign both the sides, x minus 1 greater than equal to minus 3. You will come out with x greater than equal to minus 2. Draw this thing on the number line. Number line पे draw करेंगे बेटा. This is 1 and this is minus 2, which says x greater than equal to minus 2, but x less than 1. So final solution from this case number 2 is a minus 2 to 1. ठीक है, minus 2 to 1. अब फाइनली सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, minus 2 to 1 भी इंक्लूड करना है. यूनियन minus 2 to 1 where minus 2 included. अब चेक करिए minus 2 to 1 यानी कि minus 2 to 0 तो इसके अंदर इंक्लूडेड है ऑलरेडी. minus 2 to 0 is already included in this. अब आपको जो करना है वो 0 से 1 भी इंक्लूड करना है. आई बात समझ में? तो यहां पर मैं फाइनली सॉल्यूशन लिखूंगा माइनस इंफिनिटी टू 0, एंड व्हेन आई सेइंग टिल 0 तो माइनस 2 टू 0 हैज इंक्लूडेड. अब मुझे करना है 0 से 1 इंक्लूड, तो टिल 1 यूनियन टू इंफिनिटी. ये आपका बनेगा फाइनल सॉल्यूशन, माइनस इंफिनिटी टू 1 एंड 2 टू इंफिनिटी. अब चेक करेंगे कौन सा आंसर है इसके अंदर, माइनस 2 टू 0, 2 टू 4. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस इज द रीजन वेयर यू विल गॉट द आंसर. ठीक है, जैसे माइनस 2 टू 0 सेकंड वाली इनइक्वालिटी से, और उसके बाद क्या है 2 टू इंफिनिटी के अंदर 2 टू पावर 2 टू 4 भी आ जाता है. तो दिस इज मोर करेक्ट आंसर जिसको आप टिक कर आओगे. आई बात समझ में? अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. अब यहां से आप सीखोगे कैसे एक बड़ी सी इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे इनइक्वालिटी के अंदर. सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू विल गेट करेक्टली. A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. There is a board of 91 centimeter. You want to cut in 3 lengths.
Okay, 3 pieces. Second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is twice as long as the shortest. Okay, let's suppose shortest is x. Let's see how many of you will give it correctly. देखते कितने लोग सही कर पाते हैं इस क्वेश्चन को. Okay, one person has answered. Now let's see how many of you will give it correctly. A man wants to cut a single piece of length into 3 pieces such that one of the piece is 3 centimeter longer than the smallest piece and one of the piece is twice the shortest length. What are possible lengths for the shortest board if the third is to be at least 5 centimeter long? Check करते हैं किस किसने सही दिया है. Okay, one person, Pritika, have given the right answer. Pritika ने, no, not Pritika, it's Prachi has given the right one. अब देखिए इस क्वेश्चन को आराम से सीखेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 was this. क्या क्वेश्चन है? That we are having a board which we will break in 3 portion. Let's suppose the length of the shortest, ये हमें मानना है, length of the shortest piece, let's be x centimeter, and we are saying that one of the piece is x centimeter. We are saying one of the piece is x plus 3 centimeter, 3 centimeter longer, first piece, and the third piece is twice of the shortest. So what we can say? Now what we can say, read the question. A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, that we have done, x plus 3, and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible lengths for the shortest board? Shortest board का length पूछा है. If the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second. ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर. ओके, तो ये आपका सेकंड था. अब बोला है कि जो आपका शॉर्टेस्ट है, व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस क्या है, 2x, इज एट लीस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर ज्यादा हो सेकंड से. सो डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड हैज टू बी ग्रेटर देन, दोनों के बीच का डिफरेंस कम से कम 5 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए. ये इसका मतलब है. इफ थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, यानी कि अगर ये है थर्ड पीस, ओके, और ये है सेकंड पीस, तो ये जो डिस्टेंस है बोला ये कम से कम 5 होना चाहिए. तो यहां से हमें एक इनइक्वालिटी मिलेगी, और वो क्या होगी बेटा? 2x minus x is x, minus 3 is greater than equal to 5, और यहां से आपको मिलेगा x greater than equals to 8. पहली बात तो ये कि x greater than 8 होना ही चाहिए कम से कम. अब दूसरी बात कि इन तीनों का समेशन क्या होगा? x plus 3 plus 2x is equals to 91. आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, आपको ये इक्वेशन गिवन है, और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 4. अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? x लेस देन इक्वल टू 91, ये ठीक है, ये ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम. x हैज टू बी ग्रेटर देन 8 किस ऑप्शन में है? चेक करो. x हैज टू बी ग्रेटर देन 8, ये गलत हुआ. x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये गलत हुआ. एंड x हैज टू बी ग्रेटर देन 8, ये भी गलत हुआ. अब आपके सामने बचता है सिर्फ ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, वेयर इट इज गिवन क्लियरली दैट x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8. तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. इज इट क्लियर? नाउ अच्छा, अगर आप ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करो तो हमसे आपको क्या मिलेगा? यू विल हैव 2x plus x 3x n plus 1 4x is equals to 88, और यहां से आपको मिलेगा x equals to 22. तो यहां से आप बोल सकते हो कि आपका जो x आपको मालूम चल गया दैट इट इज x इक्वल टू 22, बट यहां पर यही वाली इनइक्वालिटी क्लियरली मेंशन करती है आपके सॉल्यूशन को. पॉसिबल लेंथ पूछा है, करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है, पॉसिबल लेंथ. दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ओनली प्राची हैज गॉट द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन. लेट्स सी
हाउ मेनी ऑफ यू विल गिव इट करेक्टली? देखते हैं कौन कौन सही कर पाएगा इसको. Which ordered pair is a solution of the system 2x minus y less than equals to 5 and x plus 2y greater than 2? 2x minus y is less than equal to 5 and x plus 2y greater than equal to 2. We have to check ordered pair solution. ठीक है, कौन कौन सा सही होगा और ordered pair का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी हम सीखेंगे. So is that correct? Yes, very good. And I hope it's you, Prachi. Yes, Prachi has got the right answer. And question was, what is the ordered pair 2x minus y? Question was, question number 9, 2x minus y less than equals to 5 and x plus 2y is greater than 2. यही question है? Yes. And now, as I have said, if you are having an equation in the form of x and y, always first of all draw it by using the straight line form. So 2x minus y is equal to 5. Let's assume, let's draw the line. Okay. Put y equal to 0. Put y equal to 0. That means we are looking for a point which is on the x-axis. If you will put y equal to 0, you will have x equal to 5 by 2, comma 0. Okay. Very good morning, Krishna. And if you will put x equals to 0, if you will put x equal to 0, we are looking a point on the y-axis. And if you will do so, you will have y equals to minus 5. So this will be the equation. And you have to draw a continuous line without dot because there is an equality over here. ये आपकी पहली लाइन निकल गई. अब दूसरी लाइन कैसे निकालें? सेम यहाँ पर x plus 2y is equals to 2. Doesn't matter there is an equality or not. Now put y equal to 0. If you will put y equal to 0, you will have x equal to 2, which will come over here. यहां पर आएगा आपका 2,0. ठीक है, अब इसमें हम क्या पुट करेंगे? Now put x equal to 0, you will have y equals to 1. यानी कि ये आपका हुआ. आ रही है बात समझ में? अब क्वेश्चन क्या पूछा है? Which ordered pair is the solution of the system? अब आपको ये पूरा सॉल्व करना. हमने क्या बोला है? इनइक्वालिटी को सॉल्व करना चाहिए. यहां पर एक छोटी सी बात, देयर इज नो इक्वालिटी ओवर हियर, सो दिस विल बी अ डॉटेड लाइन. ये डॉटेड लाइन बनेगी. क्यों बनेगी? क्योंकि ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करता है. अब इसके बाद क्या करें? what we should do, it's given over here that x plus 2y has to be greater than 2. Now to check the possible solution reason, we have to put a point which does not lie on the line. For example, 0, 0. Because 0, 0 does not line both the lines. If you will put 0, 0, 0 plus 0 greater than 2, if it is false, that means the reason which contains 0, 0 will not be your solution. तो आपका possible solution क्या होगा बेटा? इस लाइन के ऊपर वाला solution will be a possible solution. और ये क्या बोलता है कि 2x minus y, इसमें 0, 0 पुट करो. 0 minus 0 less than equal to 5. 0 5 से छोटा है, बिल्कुल करेक्ट है. If it is correct, means the reason which have 0, 0 will be your right answer. तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा? ये वाला रीजन. अब आप देखिए कौन सा ऐसा रीजन है which is satisfying both of these. अगर आप चेक करोगे दोनों की दोनों में कौन सा ऐसा रीजन है where we are having the intersection. अगर आप चेक करोगे तो इस लाइन के ऊपर वाला रीजन एंड इस लाइन के ऊपर वाला रीजन अल्टीमेटली योर फाइनल सॉल्यूशन अगर हम ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को. तो ये था आपका क्या? यहां पर ये पॉइंट है 1, 0, 0, 1, सॉरी. दिस पॉइंट इज 0, 1. दिस पॉइंट इज 2, 0 एंड वी हैव टू ड्रॉ अ डॉटेड लाइन. ठीक है, ये आपकी डॉटेड लाइन बनेगी. ओके, ये आप डॉटेड लाइन बनाओगे. और दूसरी वाली लाइन क्या थी आपकी? दूसरी वाली बेटा लाइन थी आपकी ये, विच इज 5 by 2, 0. अब हमने क्या बोला? इसके ऊपर वाला रीजन, बिकॉज the reason above this line is having 0, 0 and reason above this line, so ultimately your possible reason is this one. ये है आपका possible reason. आई बात समझ में? अब यहां पर आपको चेक करना है which of the following points, like 1, -1. 1, -1 कहां पर लाई करता है? This is 1
एंड -1 विल बी ओवर हियर। तो ये तो हो गया गलत, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी 4,1, 4,1 मींस दिस पॉइंट विल बी ओवर हियर, ओके, एंड 4,1 इज ओवर हियर, यहां पर लाई करेगा, ठीक है, ये आपका पॉइंट नीचे लाई करेगा इस लाइन के। चेक कैसे करना है, ये लाइन क्या थी आपकी 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 5। पुट करके देखो इसके अंदर क्या पुट करोगे, 4,1 पुट करो, 2 इंटू 4 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5, ये आपका क्या आता है 7 लेस देन इक्वल टू 5, फॉल्स है ये, और 0,0 पर ट्रू आता है, 0,0 पर ट्रू आया, 4,1 पर फॉल्स आया। अगर दोनों ऑपोजिट देते हैं मींस दे आर ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन। दिस इज द टेक्निक, ठीक है। ग्राफ पर मत जाना क्योंकि आपको थोड़ा लग सकता है ये वाला पॉइंट यहां पर होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। So 0,0 is giving true and 4,1 for this line giving false, means they are opposite side on the line. So definitely answer number B is not correct. Similarly 2,0, where is 2,0? ये वाला पॉइंट है। 2,0 पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है? Because this is dotted line, there is no equality, we cannot include this point. Now 3,2, if you will see 3,2, x equal to 3 lies over here and x equal to 2 lies over here, y equal to 2। अब चेक करने के लिए फिर से पुट करोगे इसके अंदर 3,2, 2 into 3 minus 2 is equal to 4 less than equals to 5, which is true. 0,0 says true, 3,2 says true, means both the points are off the line, means in this region. Yes or no? And this is how we should do these kind of question. Now question number 10 on your screen. Let's see how many of you will able to solve. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है बेटा, तो अगर नहीं समझ में आए तो बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करो, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Okay, now question number 10, let's see how many of you will give. Same तरीका है। Which order pair is a solution of the system x less than equals to 5, y less than equal to 3? X less than equals to 5, y greater than equal to 3. Okay, so 2 people have answered and none of you is correct. इसलिए मैंने आपको बोला ध्यान से सीखना ये वाला। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझते हैं क्या है। x लेस देन इक्वल्स टू 5, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड x माइनस 2 एंड x माइनस 2 लेस देन 2, x माइनस y लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन 2, ठीक है। अब फिर से सीखेंगे इस क्वेश्चन को, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। x लेस देन इक्वल टू 5, व्हाट इज द लाइन x इक्वल टू 5? ये आपकी लाइन है, इससे कम है मतलब ये वाला रीजन हो गया। y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मींस दिस इज द लाइन ऑफ y इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन 3 मींस ये वाला रीजन हो गया। If I will ask you what is the intersection वाला reason, तो I will draw in the next slides what is the intersection reason. So this is the line x equals y equals to 3. This is the line x equals to 5. Okay, and we are saying this reason which is in the first quadrant will be the intersection, क्योंकि x 5 से कम होना चाहिए, ये पूरा रीजन बनेगा बेटा। ये x 5 से छोटा है लेकिन y इक्वल टू 3 से बड़ा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई लेस देन 2। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे ये वाली, पुट y इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप y इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, पुट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, एंड इफ यू विल पुट x इक्वल टू 0 यू विल हैव y इक्वल्स टू माइनस 2। तो कहां पर टच करिए लाइन, x इक्वल टू 0 and y equal to minus 2 is this point. X equal to 0 and y equals to minus 2. And this will put on putting x equal to 2 you will have y equal to 0. On putting x equal to 2 मतलब y equal to आपका कितना है 0। यहां से लाइन पास होती है। अब मुझे नहीं पता ये पॉइंट ऊपर लाई करेगा नीचे लाई करेगा। व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज x equals to 5 and y equal to 3। चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा कि यहां पर इक्वेशन लाइन क्या है, x माइनस वाई लेस देन 2, लेस देन है, कोई इक्वलिटी नहीं है, सो आई विल मेक श्योर दिस इज अ डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन ही होनी चाहिए। आई बात समझ में? अब यहां पर एक बात क्लियर करते हैं, पुट x इक्वल टू 0, यहां पर पुट किया x इक्वल टू 0
एंड y इक्वल टू 0 माइनस 0 लेस देन 2, बिल्कुल ठीक बात है, ट्रू है। नाउ पुट 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 लेस देन 2, 2 लेस देन 2 नहीं, फॉल्स है, लेकिन ये इक्वल टू है। दैट मीन्स अगर आप चेक करोगे तो ये जो लाइन है बेटा, कौन सी वाली लाइन, ये जो लाइन है x माइनस 2 पासेस थ्रू 5,3। आई बात समझ में? आप कैसे ड्रॉ करनी थी ये लाइन, दिस लाइन passes through this particular point, इस पॉइंट से लाइन पास होती है, एंड दिस इज अ डॉटेड लाइन, तो इसको हम डॉट कर देंगे। क्यों डॉट करना, ये बात आपको पता है, डॉट डॉट कर देना, ठीक है, यहां से। अब इसके बाद क्या करना है, रीजन। अब हमने क्या बोला कि x माइनस वाई लेस देन 2। Now pick a point which is not on this line. 0 minus 0 less than 2. This is true. If it is true, means your solution region will contain this particular point 0,0. मतलब इसके ऊपर का पूरा रीजन, और इसके ऊपर का पूरा रीजन कौन सा हुआ, इंटरसेक्शन। अगर आप करोगे, जस्ट अ मोमेंट, ये पूरा रीजन की हम बात कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली व्हाट इज द सॉल्यूशन रीजन। अगर आप चेक करोगे तो यू विल हैव द सेम थिंग कि इस दिस पोर्शन इज द इंटरसेक्शन वाला पॉइंट। सो फाइनली आई कैन से व्हाट इज द सॉल्यूशन रीजन, व्हाट इज द फाइनल सॉल्यूशन रीजन। इफ यू वांटेड टू ड्रॉ दिस विल कम आउट एज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सिर्फ ये वाला रीजन ही सॉल्यूशन रीजन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है 2, minus 2, वेयर इज 2, minus 2, x इक्वल टू 2, ओके, समवेयर ओवर हियर एंड minus 2, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। 2 minus 2 इज ओवर हियर, नॉट पॉसिबल। 6, 3, x इक्वल टू 6, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, इट्स क्लियरली मेंशन x हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 5, नो, नॉट पॉसिबल। ना 2, 0, क्या ये पॉसिबल है? चेक करते हैं। x इक्वल टू 2 समवेयर ओवर हियर एंड y इक्वल टू 0, यहां पर कहीं लाई करेगा। अगर आप चेक करोगे तो दिस लाइज ऑन द लाइन, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब आपका अगला ऑप्शन क्या, जब x इक्वल टू 2 y इक्वल्स टू 4, अब ये लाई, क्योंकि x इक्वल टू 2 एंड दिस लाइन इज y इक्वल टू 3, तो ये लाई करेगा यहां पर, x less than equal to 5 and y greater than equal to 3. So this is the point, option number D. This is your final answer. This is how you should do these kind of questions. So I hope it's very clear. And now see, if your concepts are not clear, now it's your duty to make sure that each and everything is very clear to you. ऐसा मत समझना बेटा कि 11th में हो तो बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है। So I want all of you, this is my feedback, that you should improve your knowledge, improve करनी पड़ेगी, because questions are damn easy. Though they are very good, they are tricky, but they are damn easy. After explanation, you should solve the questions. अगर हम list check करेंगे, कहाँ गया आपका final result, अगर हम check करते हैं, you will see your result, that out of 10 questions means somewhere around 7 to 9,000 points you should have. Only Prachi has really performed well. Now Ritika, Madhu, Riya, Khush, Pawan, Diya, James, all of you guys. Now those who is watching this session, I recommend that you should improve your knowledge. Now you have two ways. Either you can improve your knowledge from the YouTube, it's completely free and it's completely open. लेकिन इतना होने के बावजूद भी अभी तक आपने नहीं improve किया है, so definitely there is some problem. Okay, and what is the problem? That you do not stick to one particular solution. ठीक है? So go for enrollment. Enrollment will give the proper discipline. Problem is of the discipline. Discipline नहीं है बेटा। तो अगर आप सीखना चाहते हो, you should have a very disciplined. You should make sure that you are coming to the session. Make sure you come for 1 hour, complete 1 hour, complete 1 or 2 hours, whatever is the length of a session. ठीक है? यहां पर आपको डिसिप्लिन मिलेगा, यहां पर डिसिप्लिन नहीं मिलता है क्योंकि साइड में वीडियोस चलती रहती हैं एंड यू जस्ट लॉस्ट योर कंसंट्रेशन एंड देन जंप टू द अनदर वीडियो एंड देन टू अनदर वीडियो एंड देन टू अनदर एंड दिस इज हाउ देयर इज नो इंप्रूवमेंट। तो आप ऐसे चल रहे हो बेटा, आपको चलना ऐसे है, ऊपर उठना है। इस लेवल पर से ऊपर उठने के लिए यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। ठीक है? अगर आपको एनवायरमेंट चाहिए, यू थिंक दैट यूट्यूब इज नॉट वर्किंग प्रॉपर विद यू, ओके, गो फॉर एनरोलमेंट। दो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एनरोलमेंट वाले के 0% नहीं आ सकते और इसके 100% नहीं आ सकते, कुछ भी पॉसिबल है, बट द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन विल गेट द हायर मार्क्स इज डेफिनेटली मोर।
So probability with higher marks for enrollment is more than probability of the higher marks with YouTube. Definitely ज़्यादा होगा because we are more focused, we are having structured thing over here. यानी कि हर चीज में स्ट्रक्चर है. आपका हम वीकली टेस्ट लिया करेंगे, आपका टाइम टू टाइम सेशन होगा. अच्छा, यहां पर यू कैन चूज योर शेड्यूल. आप अपना शेड्यूल फिक्स कर सकते हो. ऐसा नहीं होगा कि सर 11 to 12 वी आर नॉट फ्री, वी आर इन द स्कूल एंड वी वांटेड टू लर्न. You can choose your schedule, you can choose your language. ऐसा भी नहीं होगा कि it's proper Hindi, proper English. If you're comfortable Hindi, go with it. If you're comfortable English, go with it. So you can choose your language. आप अपनी language choose कर सकते हो. ठीक है. इसके अलावा क्या है, you can access as many as hours that you wanted to learn. Okay, but you will have a proper structure. आपको बोल दिया जाएगा कि इतने बजे क्लास है according to your schedule, according to your given schedule, and then you can solve as many questions. हर क्लास के बाद ये बहुत जरूरी एक्टिविटी होती है. आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर डूइंग इट और नॉट, लेकिन हर वेदांतु के बच्चों पर एक मेंटर होता है and that mentor will take care that whether you are doing homework or not. homework में हर लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा that you have to do before the next class. हर सेशन में बहुत सारी क्विज होती हैं and we will have solved examples also. We will do each and every concept in that detail. हर सेशन में हर वीकली आपका टेस्ट होता है and we will make sure that you are having an improvement. और एक improvement नहीं है, there is a review. You can review your progress on every single parameter. इसके अलावा you can ask your doubts in a dual mode. So enrollment, after enrollment you will have dual mode, and on YouTube we are having single mode. So if you are comfortable you can directly ask, but over here we have given the facility without even knowing your master teacher, one who teaches you. You can directly contact to class teacher who will give you more personalized experience one to one. तो आपको अपना डाउट है आप डायरेक्टली पूछिए, हर बच्चे पर पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा. क्लियर है बात? तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत जरूरी होते हैं. यू शुड बी वेरी स्ट्रक्चर्ड इन योर प्रिपरेशन, यू शुड बी प्रॉपर डिसिप्लिन, यू शुड हैव अ प्रॉपर स्टडी एनवायरमेंट. Okay, you should solve questions, you should have a proper revision, each and everything that you can get in a package of the enrollment. ये आप कर सकते हो. Okay, there are many packages over there, 1 month, 2 month, 3 month, but I think you should go for at least for 3 months to have a proper progress. Is that clear? So the link आपको कहाँ मिलेगी? एनरोलमेंट की लिंक आपको मिलेगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करना, चेक मोर डिटेल्स, कैसे कैसे कौन सी फैकल्टीज हैं, बहुत सारी फैकल्टीज हैं. यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर नीड. इज दैट क्लियर? एंड द कोड दैट यू विल अप्लाई, कोड अप्लाई क्यों करना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा. देखो, कोड अप्लाई करोगे तो आपको 20% ऑफ यहां से मिल जाएगा. ठीक है, आई बात समझ में? तो ये कोड आप लिख कर रखिए. whenever you want to enroll you can enroll by using this code. So this is all guys. I hope this is completely worthy 1 hour session. अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट होता है, feel free to ask your question in the comment section. Any feedback, anything that you want from us to help in your preparation. आज के लिए इतना ही. जाने से पहले एक बार लाइक कर देना, because your love, your response is very important to let us know कि और अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए. Yes or no? तो like, share and subscribe before you leave the session. Till then, take care. Goodbye. See you all in the next lecture.